discuss climatology. As I mentioned in the group, or it was informed you in the group, that we will discuss the MCQ from climatology. Hope everybody was informed in the group, WhatsApp group. है ना? Yesterday night I informed you all, so that you will have opportunity to go through that particular subject once before I go through the MCQ. So now we will start our MCQ. So daily MCQ programs course ways of देखिए each session will have 25 MCQ. That means 1 hour. So the first question is here. Today's subject is climatology. आज our MCQ देखिए morning session and evening session. Both session we will have 25. Morning session 8 a.m. and evening 8 p.m. Okay. So obviously 8 to 9 and 8 to 9. That would be the 1 hour duration. So what is the meaning of cloud burst? Now the first MCQ before you. Hope the screen is coming to all or not? Everyone? Yes, sir. Thank you. So the first MCQ. So please जो मैंने आंसर दबो अनम्यूट करी के आंसर दबो है ना. So that's the request. Then तापर पुणी म्यूट कर दबो. Okay. Now the question. Today's subject रे मैंने climatology cover करीबा. That means specified कर देची कि all the MCQs is going to be from the climatology geography. What exactly meaning of the cloud burst? Option A, sir. Option A, sir. A. So cloud burst अर्थ meaning में कहते हैं. When you say cloud burst, that मतलब कौन है कि if I say which मतलब which year India experienced the highest cloud burst, that is the 2013. उत्तराखंड फ्लड समझते जानते हो, केदारनाथ फ्लड का था. Everyone hope you might have heard about that, है ना. जो that is से जो devastated flood ही थला. So that was the best example of cloud burst. तो cloud burst अर्थ कौन माने गोटे अल्प समय अधिक वर्षा ही जीवा सेही बेले कंडीशन को कहा जाय क्लाउड बर्स्ट है ना. तेणु हेवी डाउनपोर जाको हम कहूचे. सो क्लाउड बर्स्ट मीनिंग व्हाट? हेवी डाउनपोर. So okay, what exactly the meaning of cloud burst? The cloud burst meaning होचे heavy downpour that might have your thunderstorm and lightning associated हेई पारे. So that means first question ro answer cloud burst ro answer होची option A. That is what? Abnormally heavy downpour, that is the rain associated with thunderstorm. ये थला फर्स्ट क्वेश्चन. होप क्लाउड बर्स्ट बुझा पड़ी जो. क्लाउड बर्स्ट अर्थ जदि माने अल्प समय अधिक रेन होची ताकू कहा जाय क्लाउड बर्स्ट. तुमको अधिक रेन केते लेट्स से 1 आवर रे 2 to 3 सेंटीमीटर्स, लेट्स से 3 सेंटीमीटर्स रो अधिक रेनफॉल होची, 3 सेंटीमीटर्स रो अधिक होची, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होची, दैट वुड बी क्लाउड बर्स्ट रो क्राइटेरिया रे आसी जिवो है ना. सो अच्छा मो कहइतली कि ठीक 8 pm मतलब एम बिफोर जॉइन करबो सो दैट इट वुड नॉट बी है ना. आगु को हमें ऐप रे नै जो ये इशू होबनी. क्लाउड बर्स्ट हम देखिदेले तो आर्टिफिशियल रेन नुह. आर्टिफिशियल रेन केमिति हुए ये ऑप्शन को हम डिस्कस करबा. आर्टिफिशियल रेन क्लाउड बर्स्ट इज नॉट आर्टिफिशियल रेन. आर्टिफिशियल रेन केमिति करा जाय? लेट्स से कौन सी जगह गोटे रेन हो, वी विल ट्राई टू आर्टिफिशियली जनरेट द रेन बाय सीडिंग, क्लाउड सीडिंग जाको कहा जाय क्लाउड सीडिंग. जोटे सिल्वर आयोडीन वगैरह स्प्रे करा जाए सो दैट हमें ड्राई सॉल्ट जाको हमें कहूचे ड्राई सॉल्ट है ना. सो सिल्वर आयोडीन और ड्राई सॉल्ट को हमें स्प्रे कर दो स्काई रे है ना इन द एटमॉस्फेयर. लिक्विड अमोनिया पे हो हे परियो बिल्कुल हे परियो है ना. सिल्वर आयोडीन ड्राई आइस आपको हमें कोन करबा स्प्रे करबा. तुमको साधारणतः लिक्विड हमें एथि पे स्प्रे करूनु कना सेट को स्प्रे करे बहुत डिफिकल्ट. हमको दरकार कोन जहार एफिनिटी थिबो, खास करके जहार एफिनिटी वाटर सहित अधिक थिबो. आ वाटर सहित एफिनिटी कार अधिक? ड्राई आइस रो है ना. ड्राई आइस रो एफिनिटी विथ वाटर इज मैक्सिमम. सेथि पे ड्राई आइस को कोन करा जाय स्प्रे करा जाय है ना. जो हमर आर्टिफिशियल रेन जदि तुमको एमती क्वेश्चन भी पचारि पर आर्टिफिशियल रेन इंडिया रे कोठी करा जाउची, कर्नाटक, महाराष्ट्र एसो रीजन रे करा जाय आर्टिफिशियल रेन. कोन पे जोठी रेन होनी दोस रीजन is less rainfall area there artificial rain करा जाए. खास करी कर्नाटक मराठावाड़ा region of हमें कहबा लाथुर हैला कर्नाटक मराठावाड़ा महाराष्ट्र रो एसो रीजन रे क्लाउड सीडिंग करा जाए
आर्टिफिशियल रेन करा जाए है ना। नेक्स्ट टाइम में देखिए ये तो लेछि तमरो सोइंग ऑफ सीड ऑफ क्रॉप्स इन द क्लाउड ये वेक ए किछि एमते किछि कांसेप्ट नहीं, दिस इज ओनली कंफ्यूज करे पे दिया जाइछि। देन प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लेक्स ऑफ क्लाउड ए किछि नहीं, ये भी सेमती किछि नहीं है ना। जदि आमे आको क्लाउड रे क्लासिफिकेशन पुट करबा द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लेक्स ऑफ क्लाउड ताले एटा कोन हिजबो एमान को आमे को क्यूमुलस क्लाउड, आपको आमे कोन को क्यूमुलस क्लाउड जेमती एमती देखो पैचेस ऑफ क्लाउड थो एमती गुड एमती क्लाउड सब थो है ना। तो पैचेस ऑफ क्लाउड थिले हमको कहा जे क्यूमुलस मतलब एकाठी 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 हे कि थो क्लाउड सब पैच पैच हे कि थो है ना, पैचेस थाए तो सेमान को हमें क्यूमुलस क्लाउड बोली कहू। तो ऑप्शन डी को जदि मो डिस्कस करबी दैट वुड बी क्यूमुलस क्लाउड टाइप हमको देखा जीवो। तो फास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते क्लाउड बर्स्ट कौन ना, क्लाउड बर्स्ट होची हेवी डाउनपोर से कोठी भी हे पारे। दैट मींस तुमको पचारे जीवो कि क्लाउड बर्स्ट ओनली हिमालयन रे हुए, कारण समस्त जानछ 2013 रे क्लाउड बर्स्ट हेतला केदारनाथ रे। तेणु आमर गोटे जनरल परसेप्शन लगी पारे कि यस क्लाउड बर्स्ट विल बी हैपन ओनली इन हिमालय, ओनली सेमती किछ नाही, नो ओनली, ओनली वर्ड मतलब एक्सट्रीम वर्ड कि अदर रीजन हे परिवन सेमती किछ माने नहीं। एबे लेट्स से साइक्लोन आसुची हम कहबा ना, साइक्लोन टाइम रे क्लाउड बर्स्ट होची कैन हेवी रेन होची 2-3 दिन पूरा कंटिन्यूअस जो रेन रहबे दैट इज आल्सो क्लाउड बर्स्ट। तो ये थला हमर क्वेश्चन 1 रो एक्सप्लेनेशन पूरा। तो तुमको आर्टिफिशियल रेन रू पचारि पारे कि ओडिशा आर्टिफिशियल रेन करूची कि नहीं, कर्नाटक करूची कि नहीं। तो होप तुमको जना पड़े जो कर्नाटक करूची, महाराष्ट्र करूची, केतर केतर राजस्थान करंती है ना, आंध्र प्रदेश भी करंती, रायलसीमा रीजन इज आल्सो समस्तो पता है कि ड्राई रीजन है ना। comes to the second question. In which of the following layer of atmosphere the absorption and scattering of solar ultraviolet rays take place? Atmosphere. Stratosphere. 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 Okay, fine. That means आपको हमें कौचे आपको कौन भी कहा ओजोन लेयर, आपको कौन कहा आपको हमें Ozone ओजोन layer. लेयर भी कौचे है ना आपको ओजोन लेयर भी कौचे हमें दैट इज O3। तो कहो ओजोन लेयर भी कौचे हमें O3 ना। ओजोन लेयर मु टिके फटाफट कही थी ओजोन जो था O3 है ना, ये कौन करे अल्ट्रा वायलेट बाय यूवी रेज को ऑब्जर्व करे है ना, सो दैट प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, अदरवाइज स्किन कैंसर है परे, ब्लाइंडनेस है परे, किसी डिजीजेस है परे, फोटोसिंथेसिस प्लांट रो कमी जीवो। तो जो हमर कोन जो आमे जाको कहूचे क्लोरोलिसिस बुझि परछो, क्लोरोफिल गुडा खत्म हे जीवो प्लांट रो यूवीज को। तो ये सब प्रॉब्लम देखा जीवो हमकु यूवीज रो मु कहूची। अच्छा यूवीज आउ कोन गोटे आउ गोटे सबठु इंपोर्टेंट कथा कोन जानछ कि नहीं, यूवीज जो यूवीज को ऑब्जर्व किए कहूची O3, बट सबठु इंपोर्टेंट कथा हला यूवीज आल्सो द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O3, नाटा काकू जणा नहीं। No, sir. What answer option? UV is also responsible for the formation of O3 केमिति लेट्स से O2 ये एमती बुलुची एटमॉस्फेयर गोटे UV आसिला ये ताको ब्रेक कर दो दीटा O रे कन्वर्ट हे गेला, दीटा मॉलिक्यूल्स रे कन्वर्ट हे गेला, आउ गोटे O2 घुरी बुलुची एटमॉस्फेयर ये जे कि ता सहित मिसि गेला केते हे गेला O3। तो ओजोन फॉर्मेशन रे की हेल्प करूची UVs, ताल ध्यान से मनथबो UVs फॉर्मेशन जो O3 केमिति फॉर्मेशन होची बिकॉज़ ऑफ UVs को ऑब्जर्व किए करूची O3 ना बुझा पड़िबो एटा काकू है ना। ये No, sir. डन आउ यूवी साधारणतः हमर कोन करे जो तुमको यूवीज कथा हम कहथली ए यूवीज रो अच्छा ओजोन कथा हम कहथली ओजोन अच्छा ओजोन केते रो केते किलोमीटर देखा जबो एटमॉस्फेयर व्हाट वुड बी द अल्टीट्यूड? 35 ओके 15 to 35 दैट वुड बी द आकु कहा जे ओजोन लेयर। बट एमिथि आगुरु ओजोन लेयर थिला बट देयर इज नो सच ओजोन लेयर आगुरु गोटे जेमति तमर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मझरे थिला आगे कोन ओजोन लेयर। एबे ओजोन लेयर को हम कोन करछे दीटा रे डिवाइड कर दैछे माने मैक्सिमम आसु हेउचे तमर कोथरे स्ट्रेटोस्फियर रे है ना, ट्रोपोस्फियर कम आसुची याना ट्रोपोस्फियर मैक्सिमम हाइट केते 18 किलोमीटर 16 to 18 किलोमीटर होप समस्त को जणा अछि ट्रोपोपोज। तो दैट मींस स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हे जिवो। तो दैट मींस हमें कहि परबा इनडायरेक्टली the ozone sphere is now coming under the stratosphere. Done everyone? Should I move? Hope thermosphere mesosphere समस्त को माना बुझा पड़िबो ना बुझा पड़िबो फटाफट कहि देबी ठीक अछि। Yes. ट्रोपोस्फियर मींस तमर जो एटमॉस्फेयर जो फास्ट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट इज अटैच्ड टू द ग्राउंड बा हमर अर्थ को अटैच हे केछि एना ट्रोपोस्फियर जार हाइट होछि
ट्रोपोपोज होची केते 16 टू 18 किलोमीटर ये कोठी देखा जिवो तमरो इक्वेटर रे एंड 6 टू 8 किलोमीटर कोठी देखा जिवे पोल पे देखा जिवो ट्रोपोपोज नेक्स्ट टू द नेक्स्ट आसो मेजोस्फियर कोठी स्टार्ट हेबो एनीवन 50 टू 80 किलोमीटर 70. है ना 50 टू 80 किलोमीटर देन आसो तमरो थर्मोस्फियर किसी एंड नहीं दैट वुड बी डन ये थिला तमरो है ना एटमॉस्फेरिक हमें देखिଥିଲେ तो दैट मीन्स मान रखो 16 ରୁ 50 50 ରୁ 80 80 ରୁ onwards. The next question before you, if there is no carbon dioxide in the earth atmosphere, the temperature of the earth's surface would be Higher than the present. Less than the present. so try everyone try this question. If there would be no carbon dioxide presence in the atmosphere, what would be the effect surface? So there would be less than the present. Less than the What present. less than the present? Higher than the present केमती हो कार्बन डाइऑक्साइड होची ग्रीन हाउस इफेक्ट पकोची Yes, sir. है ना so that means what CO2 is putting like the what that's making the greenhouse effect तो ये greenhouse effect ର temperature बढ़िबो ना कम बुझि परछ that means बढ़ुची ताले नहीं नहीं गोटे मिनिट मु कहूची बढ़ुची वर्तमान बढ़ुची ना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची ग्रीन हाउस बढ़ुची टेम्परेचर बढ़ुची मु जदी कार्बन डाइऑक्साइड को हटेई देबी उल्टा ही जीवो ना ना बुझा पड़िबनी कमी जीवो टेम्परेचर ता अर्थ कोन देयर इज नो मु लिखिची तो अर्थ लेस हबो एबे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ुची सेतबे तो कहआ जाउची ना कार्बन डाइऑक्साइड को कम करा जाउ सो दैट ग्लोबल टेम्परेचर को हमें 0.5 डिग्री भितरे टारगेट रखबा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 कथा जदी मने पडुथिबो है ना ठीक अछि तेणु करी आम कार्बन डाइऑक्साइड जदी कमी जीवो टेम्परेचर कमी जीवो ता द्वारा कोन हबो लाइफ पॉसिबल ही परिबनी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड दरकार कोन पई दरकार फोटोसिंथेसिस पे एक दरकार कार्बन डाइऑक्साइड कोन अर्थ को वार्म रखे पे अदरवाइज अर्थ वुड बी ए कोल्ड डेजर्ट हे जीवो ना सो दैट हे परिबनी लाइफ पॉसिबल हे परिबनी ये थिला हमर रॉक फॉर्मेशन रे हेल्प करूची ह्यूमन बॉडी रे अछि कार्बन डाइऑक्साइड तो ये थिला हमको कार्बन डाइऑक्साइड था देखितला एटमॉस्फेयर रे ना कार्बन डाइऑक्साइड रो सोर्सेस कोन सोर्सेस कोन if I say what are the sources of carbon dioxide to the atmosphere Fossil fuel. fossil fuels volcanic eruption भी करियो नहीं करियो volcanic eruption भी करियो है ना जेते तुम्हार fossil fuel combustion of fossil fuels that means what combustion of fossil fuels natural भी होची एमते नहीं कि human is the sole responsible for carbon dioxide that is ejected into the atmosphere. Now next question আমি দেখো যে কোন climatology. What is the general direction of cyclone formed in Bay of Bengal? East to west. West. Option B. B option. East to west. East to west. So option is what? East to west. So option is east to west. For example, if I draw Indian that is the India map like this and here is your Andaman Nicobar तो मैंने समझते सुनी चो कि मतलब many times it's not the first time that you're hearing that cyclone forms in this particular region that they moves and strike the Odisha coast either Andhra coast or Bengal so that means the general direction is what east to west isn't it why east to west ताले एमती काहे क्या सोचे with the influence of trade what trade wind so you have to remember that the cyclones that moves with the influence of trade winds कोन करूची ताको ड्राइव करके आनिबो है ना सो साइक्लोन तो समझते जानी छो साइक्लोन फॉर्मेशन पे कंडीशन कोन दरकार ट्रॉपिकल साइक्लोन Coriolis force 27 degree outside temperature, water temperature. वाटर टेम्परेचर फटाफट मु कहूची म्यूट कर दियो सो दैट समझते जानी परियो temperature केते दरकार 27 degree what sea surface temperature we need either there might be mentioned in option 26.5 degree or there would be 27 degree whichever you may take that is true fact ha एमिति के ऑप्शन रे दबन कि 25 5 देबो 26.5 and 27 that would be the गलत ऑप्शन हे जो कारण किछि बुक्स को स्टैंडर्ड जो माने क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते 25.6 also enough and 27 तो एमिति दीटा क्लोज ऑप्शन दिया जबो नाही if close option are there then go for the 27 okay first one then we need what that is the Coriolis force darkar hope that means what Coriolis force darkar then latitude तमे जानि छ केते रु केते देखा जो 5 to 20 है ना 20 डिग्री ए भीतर तुमको देखा जीवो
ट्रेड विंड प्रेजेंस दरकार, टेम्परेचर अधिक दरकार है ना, ये सब आम कंडीशन रही। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन रो किछि ना कहि दियो फटाफट। ऑस्ट्रेलिया रे ट्रॉपिकल साइक्लोन को कोन कहै छै? विली विली समस्त जानि छ। चाइना रे है ना, टाइफून, चाइना टाइफून। व्हाट अबाउट द कैरिबियन सी? कैरिबियन सी रे कोन देखा छिबो? यूएस रो कोन हरिकेन? दैट हरिकेन, हरिकेन। इंडियन ओशन रे साइक्लोन। tropical cyclone, खाली cyclone कहबन tropical cyclone. Okay, so these are the different names with the different places. Tropical cyclone. So tropical cyclone हम देखबा next जीवा में local winds रो क्वेश्चन पछरे दैछि के consider the following pair based on the name and relate to the local wind and country. एटी कहै छै local winds and country. For example, option 1 रे दियै छै के सिरोको फ्रांस, बोरा इटली, ठीक है माको let me, yes, now you can see. अच्छा एटा टिके अच्छा this would be 1 2 3. So option is like this कि तुमको सिरोको फ्रांस, बोरा इटली, एक मिनट मु सेति कही जॉइन करबो 8टा पूर्व 5 मिनिट्स बिफोर जॉइन कर देबो। जॉइन करके तुम लिफ्ट करके आउ थे जॉइन कर किसी असुविधा नहीं, इन बिटवीन जॉइन करनी है ना। तो ये रहिबो सिरोको फ्रांस, ऑप्शन दिया है हमको सिरोको फ्रांस, बोरा इटली, ब्लिजार्ड कनाडा। शेष कही तुमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हमको कहा जाई Sirocco, France is wrong. से लिखाई तुमको कौन लिखाई देखो above the pair is not correctly ऑप्शन matched. सी। ओके, नॉट करेक्टली मैच। हाँ सिरोको, Sirocco, France. सिरोको फ्रांस। कारण आम देखीचे इटली पाखे कि अच्छी एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी रे कौन देखा जाए बोरा है ना, बोरा देखा जाए एड्रियाटिक सी रे। सो ऑप्शन 1 को हमें कैंसल कर देले, ऑप्शन 1 इज कैंसल। ना ऑप्शन 2 रे थिला इला कोटे थिला, अच्छा 2 रे अछि ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 को हमें कैंसल कर देले। दैट मींस दिस इज गॉट कैंसल। देन आसबा 1 को बी को आसीबा, बी को हमें देखबा बी रे कौन लिखाई छी तमरो खाली এটা আচ্ছা বি রে লিখেছি only one को आसी जो এটা তোমার সিরোকো, এটা তো নো ফ্রান্সের সিরোকো দেখা যায় না, সিরোকো কোটি দেখা যায় Greece और इटली जे देखते हैं। वेरी गुड Morocco area, Africa रे। है ना। तो ये तुमको देखा जो नेक्स्ट आसीबा में which of the following is characteristics climate of tropical savanna, तार characteristics कौन savanna climate रो characteristics? rainfall throughout the year. characteristics of savanna region बा savanna tropical जो region अछि तार characteristics कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किछि अच्छा किछि लोक कहला रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, आउ किछि को Option A. ऑप्शन ए, बाकी को ट्राई करो। सो इट वुड बी डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। तो आंसर कौन रहबो सी, डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन। केमिति तुम कहबो केमिति ना साभाना कोठी थाय आगे हम टिके देखि देबा है ना। तो साभाना काहा को कहउचे हम, साभाना होची गोटे ड्राई फॉरेस्ट। प्रथम कथा एटा हमकु जानियार थिला कि साभाना होची गोटे ड्राई फॉरेस्ट, साभाना इज नॉट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, साकु तो हम एवरग्रीन कहबा बुझ पड़तनी। तो साभाना कोठी देखा जाए डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल। लेट्स से मु अफ्रीका मैप ड्रॉ करके देखैबी, ये रहबा अफ्रीका मैप, ठीक अछि जस्ट एटी देखा। तो ये रहबो तुमरो रेन फॉरेस्ट, ये रहबो कोन रेन फॉरेस्ट, एटा रहबो हमरो रेन फॉरेस्ट, ऊपर रहबो कोन डेजर्ट, ऊपर कोन रहबो डेजर्ट, इन बिटवीन देखा जिवो साभाना। तले ई रीजन रे हमको देखा जिवो साभाना ना बुझा पड़िबो नेबे। साभाना होची बिटवीन डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट, ताले एटा को प्रकार डेसिडस ना बुझा पड़िबोनी, it would be a deciduous type। तेणु करके ये कौन है जो आंसर would be अब deciduous forest रो कौन था गोटे डेफिनेट ड्राई सीजन था। लेट्स से इंडिया,
इंडिया रो गोटे ड्राई सीजन अच्छी कि नहीं मध्य प्रदेश रो को प्रकार फॉरेस्ट देखा जाए डेसिडस फॉरेस्ट तार गोटे डेफिनेट सीजन नहीं ड्राई सीजन और वेट सीजन ना वर्ष सारा वेट अच्छी वर्ष सारा वेट हेल्थ एवरग्रीन हो जिवो तो डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन थाए सो दैट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ष सारा रेनफॉल हेले एवरग्रीन हबो सावाना हबो नहीं तो बी केमती हबो ना बुझा पड़िबनी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज्ड the anticyclones तो ओके दिस वन ए 1 2 3 सॉरी टिकेट देखि दियो नाउ तुमको कोन करे पड़ो करेक्ट आंसर तुमको फाइंड आउट करे पड़ो करेक्ट सीक्वेंस एंटीसाइक्लोन रो मतलब कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अछि Sir, it B. आगे समस्त देखि पाछ ऑप्शन एवरीवन विजिबल ऑप्शन Yes, sir. anticyclones are low pressure option 1 दिया है option 2 they are characterized by divergence of wind circulation option 3 they are indicative of dry weather condition ना एबे हम दिया है आंसर की को पाइबो 1 रे देखिबा ए रे देखिबा 1 and 3 बी रे 2 and 3 सी रे 1 only डी रे ये रे तमरो 1 2 3 है ना कैरेक्टराइज्ड बाय अच्छा मु गोटे से दिन फॉर्मेट सिखेइतले एप्लीकेशन ये देखो एठी कोन कहूची कैरेक्टराइज्ड बाय ये गोटे एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हियर वुड बी एवरीथिंग है ना दैट इज 1 2 3 दैट मींस आपको हमें कैरेक्टर बा कहबा एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू तो ताको हमें साधारणतः ऑल थाए केमिति ना अच्छा मते को एंटी साइक्लोन रो मीनिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी साइक्लोन opposite to cyclone cyclone means what low pressure so anticyclone means what it would be high pressure ना बुझा पड़िबनी high pressure wind को डाइवर्स कराए low pressure wind को कन्वर्ट्स कराए ना बुझा पड़िबनी एटा high pressure convergence the wind low pressure diverge the wind that means एटी कोन लिखाई छी divergence so this one 2 point is correct एठी तुमको लिखाई छी अच्छा 1 मिनट रो ये लो प्रेशर कोन लिखाई छी ताको कोन तमे ऑप्शन डी कहितला समझते 1 मिनट Sir, B answer. 2 and 3. ओहो मु अब देखिनी तमरो कोन कहलो मु अच्छा अच्छा ये कोन लो प्रेशर लिखाई छी ओहो अच्छा अच्छा 1 मिनट रो मु आंसर टा देखे तले कोन हो तो लो प्रेशर लिखाई छी दैट मींस ए कैंसिल तले 1 कैंसिल 1 गॉट कैंसिल तले ऑप्शन बी बारियो ठीक हो ऑप्शन बी है ना बाकी तो 1 कैंसिल हे गेले बी ही तो बारियो आ कुछ हे परियोनी हो है ना ठीक अछि अच्छा मु भाबिले डी कहलो त माने मु अब देखिनी ऑप्शन को क्लोजली ठीक अछि आंसर तले कोन हो बी हबो कारण एंटी साइक्लोन होची गोटे हाई प्रेशर लो प्रेशर नो तनो एठी कोन लिखाई छी लो प्रेशर तो 1 गॉट कैंसिल तो रहिला कोन हम भर बी ऑप्शन 1 को कैंसिल करले मिली जो तनो हाई प्रेशर कोन करे विंड को डाइवर्स करे दैट मींस ये ठीक अछि तले 2 एठी अछि हमको 2 मिली जाउची है ना देन कोन करूची ड्राई वेदर ऑब्वियसली हाई प्रेशर अर्थ ड्राई वेदर लो प्रेशर रे रेन हबो क्लाउड फॉर्मेशन हबो वेट हि जो क्लाइमेट टा आउ हाई प्रेशर रे कोन हि जो ड्राई हि जो ना बुझा पड़िबो नै देखा को डन ना कोन को समस्या बुझा पड़ुची Yes, sir. Yes, sir. है ना ये रहबो तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हम which of the following would be generally associated with tornadoes तो हमें क्लाइमेट रू देखुचे सेति पे मैक्सिमम क्वेश्चन क्लाइमेट रू ही आसीबो आउ किछि कोड आसीबो ही नहीं मैक्सिमम नो ऑल क्वेश्चन इज दैट 8 नंबर क्वेश्चन हमें देखुचे which of the following would you generally associate with the tornadoes सहित कोन एसोसिएट थाए एटा को कैंसिल करतियो है ना USA. ऑप्शन 1 मतलब हमको कहै छी को रीजन टा है ना तो जोटे के एसोसिएट विथ टर्नाडो अधिक तो हमको देखा जो वेदर चाइना चाइना सी गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए इंडियन ओशन तो आंसर बट आंसर इज व्हाट बी आंसर इज बी यूएसए केमती हबो गल्फ ऑफ मैक्सिको हबो ना गल्फ ऑफ मैक्सिको सर हमर टमाटर कोस्टल यूएस ना मिसिसिपी दिल्ली रे यूएसए जोड़ा हमर अछि कि सर टमाटर आगे सर साउथ यूएसए हाँ साउथ यूएसए
जदि मेक्सिको ऑप्शन रे न थांता यूएसए विल बी द आंसर बुझ परछ तो आर कोस्टल रीजन रे सब देखा छ गल्फ ऑफ मेक्सिको रो चारिपटे जो कोस्टल रीजन जोटा तुम कहछो साउथ अमेरिका तेणु आमे आको टिके स्पेसिफिक कर देछि मु जानि कि कंफ्यूज करिया पे है ना अदरवाइज यदि तुमको एते क्लोज ऑप्शन देबेनी से माने जदि क्लोज ऑप्शन देला देन गो फॉर द गल्फ ऑफ मेक्सिको और जदि यूएसए अछि गो फॉर यूएसए जदि एटा लेट्स से इट्स नॉट गिवन अदर कंट्री एठी मु कनाडा कर देबी देन गो फॉर यूएसए और जदि खाली यूएसए को स्पेसिफिक कर देबी साउथ साउदर्न कोस्टल यूएसए ईस्टर्न कोस्टल एमती करबो तब ताकू दैट मींस मु नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ करके देखि दोची ये रे हमर गल्फ ऑफ मेक्सिको एई रीजन रे देखा जाय दैट मींस एटा गल्फ ऑफ मेक्सिको रो चारिपटे देखा जाय तुमको टर्नाडो है ना बुझा पड़िबो एटा हमर नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट डोल्ड्रम टर्नाडोज तो जानी समझते दे आर एक्सट्रीम लो प्रेशर गोटे लो प्रेशर थाए एंड फास्ट रोटेटिंग विंड एसोसिएट थाए विथ लो प्रेशर गोटे स्पाइरल बैंड है कि एयर टा ऊपर को उठू थाए एमती टर्नाडो थाए फनल शेप रे थाए टर्नाडो रो शेप केमती थाए फनल शेप एमती थाए से वो एयर को शॉक करे है ना एयर टा कोन करे शॉक करे एटा गोटे लो प्रेशर अगेन आई रिपीट ए गोटे लो प्रेशर एयर को शॉक करे आ एटा फनल शेप रो थाए है ना एबे रिसेंटली टर्नाडो आस्थला जोथरे कि देखियो बहुत सारा घर को डैमेज कर देछि यूएसए रे खास करी कि गल्फ ऑफ हमरो गल्फ रीजन रे देखा जाय जोटा गल्फ ऑफ मेक्सिको रीजन चारि पटरे देखा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोल्ड्रम सेटा यूनिफॉर्म लो प्रेशर Yes, Yes, uniform sir. low pressure. Uniform low pressure. एक मिनट मुझे चेक कर दिए so option 1 is uniform low pressure uniform high pressure wind with velocity no ये cancel this one cancel this is the answer so answer is what uniform low pressure ताहले ये वर्ष सारा कोन थाए लो प्रेशर सो डोल्ड्रम कोठी थाए फटाफट फिगर ड्रॉ कर देबा ना इक्वेटर रो 0 डिग्री 5 0 to 5 इक्वेटर रो 0 to 5 0 to 5 ए रीजन को कहा जाय डोल्ड्रम ना बुझा पड़िबनी 0 to 5 of equator throughout the year it will receive high insolation रिसीव करबो तेणु करी ए रीजन रहबो थ्रू आउट द ईयर लो प्रेशर एटी प्रेशर किछि चेंज हेबो नै तो ये प्रेशर को हमें कहूचे लो प्रेशर दैट इज द व्हाट आई विल से डोल्ड्रम तो डोल्ड्रम होची कोन सेटा हम कोन दिन सर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स खाली इक्वेटर रे बोली सेमति किछि मानु न थाए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स डज नॉट मीन्स डोल्ड्रम सेथरे तुमको दीटा ट्रेड विंड मीटिंग करिवो आईटीसी जेट जाको हम कहूचे सेथरे ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करिवो सो दैट कैन फॉर्म ईदर हियर कोठी भी फॉर्मेशन हे पारे 30 डिग्री बोथ लैटिट्यूड भितरे कोठी भी फॉर्मेशन होबे आईटीसी जेट रो एरिया बहुत बड़ो थाए एंड सेटा स्टैटिक न थाए बट डोल्ड्रम रो एरिया स्टैटिक ऑट टू बी 0 to 5 आउ किछि नाही ना बुझा पड़िबनी डिफरेंस यस सर है ना सो डोल्ड्रम रे मु कहबी डोल्ड्रम रीजन इज हैविंग हाई कोरिलेस फोर्स ट्रू और फॉल्स doldrum region is having high Coriolis force true or false सेटा फॉल्स ट्रू सर false ना Coriolis force कोरिलेसिस वाज पोलर रे अधिक सर इक्वेटर रु पोल को बढ़ी गले Coriolis force बढ़ी बढ़ी जाए इक्वेटर रे Coriolis force लगभग 0 सेटिफाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन 0 to 5 डिग्री 0 to 5 डिग्री फॉर्मेशन हुए नहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन केते 5 टू साधारणतः तुमको 4 देखा जो आईएमडी साइट रे देखि चेक करियो 4 डिग्री देखा जो सेटा मोर किछि दैट इज नॉट माय बिजनेस हला तो मु स्टैंडर्ड नेबी है ना केबे 4 डिग्री रे फॉर्मेशन हैला दैट वुड बी एक्सेप्शनल सो डोंट वरी अबाउट दैट 5 to 25 डिग्री लैटिट्यूड भीतर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हुए यू कैन राइट 20 डिग्री कारण 25 को गले हाई प्रेशर आसी जीवो तेणु एटा टिके डिफर करे 1 डिग्री 2 डिग्री डोंट वरी बट द मोस्ट प्रिसाइज आई विल प्रिफर 5 to 20 degree because mu jethra 25 degree latitude को जाउछे that would be the high pressure region 23 and half subtropical high pressure so low pressure formation ही परिबनी so that is the तेणु करी कि Coriolis force कोठी देखा जाय हमरो सबटो अधिक देखा जो पोलर रीजन रे सबटो कम हैला इक्वेटर that means doldrum will have least Coriolis force ना बुझा पड़बनी एबे यस सर then Yeah. अरे बुझा पड़ो समस्त एक्सप्लेनेशन ना काकू बुझा पड़ोनी anyone is feeling like very new to these questions anyone No. okay fine
Rajesh is fine with it? You know, you too as well. Hope. Now roaring 40s. What is this? Now option before you is the next question. The term roaring 40s refers to what? Option 1 is a strong tidal waves between 40 to 60 degree south, like the southern hemisphere. A strong ocean wind between 40 to 60 degrees southern hemisphere. A loud voice of volcanic eruption between 40 to 60 degree in southern hemisphere, the southern sea. And the sailor heard the cloud storm, that is the voice, stormy voice between. So what is this? Now the options are very difficult options put together. They are looking like B. very similar. It Option is B. Straight line. ocean winds between yours. 30 Ocean degrees wind. south. Wind, sir. ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମୁଁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ପୁଟ୍ କରୁଛି କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଣକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନ ପଢ଼ିଥିବ ନା ତାକୁ ଲାଗିବ ରୋରିଂ ଅର୍ଥ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଭଳିଆ ଲାଉଡ୍ ଭଏସ୍ ପିକ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ୍କାନିକ୍ କରପ୍ସନ୍ ତାକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ତ ସେ ଏ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ତେଣୁ କରିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଯିଏ ପଢ଼ିନଥିବ ସେ କରିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଏ so that to trap those who have non-serious candidate ତାଙ୍କୁ trap କରାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା so ଯାହା ବି ହଉ so roaring 40s ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ simple if I put a question here कि why that is मतलब why the speed is increased in this particular latitude if I say कि why that speed suddenly increase Because can there you are no ସେଇଟା barriers, no no unequal continents. distribution of a land or water ଭିତରେ very good. So answer is what? Unequal, uneven distribution of. That means the region is dominated through the water bodies. अच्छा, let's say if you are saying that the region is does not have any land mass. So what exactly the region? Then ठीक है मैं पूछली कि the southern hemisphere is dominated through the water bodies. Less land mass is there. So तादर problem कोठी आसुची. What exactly the region कौन ताहले? Region कौन? Anyone? That is the high, sir, high pressure. High pressure region. अच्छा. This is not explanation. Anyone else try? Those who Sir, are having କୌଣସି questions. barrier ନାହିଁ. तो barrier Se- ବୁଝିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେଇଟା barrier କହିଲେ ହବନି friction that would be what friction ତ ଏଠି କ'ଣ yes less sir surface less Okay. friction so what it would be less friction କମିଗଲେ speed ବଢିଯିବନି ଆଜ୍ଞା. friction କମିଗଲେ speed ବଢିଯିବ ନା so this would be the answer as we are having less mountain less land so water and water everywhere there is water and water so that what less friction over that particular region that means speed will increase ना बुझा पड़िबनी काकू समस्त बुझा पड़ुछ एवरीवन रोरिंग 40 पर क्या आसीबो रोरिंग 40 पर क्या आसीबो 40 डिग्री लैटिट्यूड देखा जो रोरिंग 40 50 डिग्री देखा जो कोन फ्यूरियस 50 60 डिग्री देखा जो श्रिंकिंग 60s ना बुझा पड़िबनी दीस आर द नेम ऑफ व्हाट global winds sir. ग्लोबल विंड वेस्टर्ली westerly व्हाट दैट इज द वेस्टर्ली ना बुझा पड़िबनी कोन वेस्टर्ली अरे बुझा पड़ुछ काकू ना काकू बाउंस होची एनीवन इज नॉट कनेक्टिंग or looking like these are the thunder from the blue anyone is feeling like that thunder from blue kaku laguchi lagun to very good because you have to ready also ମୁଁ କହୁନି କି ମୋର ଏଇ क्वेश्चन ଟା ओपीएससी ପଚାରିବ either ମୁଁ ଏଠି roaring 40s ଦେଇକି ତମକୁ roaring 50s କଥା କହିଦେଲି shrinking 60s କଥା କହିଦେଲି they might ask you that either ତମକୁ ପଚାରି ପାରେ ओपीएससी कि କାହିଁକି ଏଠି wind speed ବଢି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ डिस्कस कले कि फ्रिक्शन कमी जो ओशन वाटर अछि फ्रिक्शन कमी जिवो कॉन्टिनेंट इज वेरी लेस कॉन्टिनेंट आउट देयर सो दैट एमिति भी क्वेश्चन पचारि पारे तो एक्सप्लेनेशन रो क्वेश्चन रो आसीबो तुमको ता बाहर आसीबार चांसेस बहुत कम एक्सप्लेनेशन रो एबे ओजोन फॉर्मेशन हम देखितले ओजोन रो काम हम देखितले ओजोन लेयर कथा भी हम डिस्कस करदेले जो डिस्कशन तुमको बेनिफिट दबो ठीक अछि now comes to the condition for the formation of tropical cyclone ठीक है देखिए condition so fast rise sea surface temperature then core release force low shear force upper air divergence these are the some condition answer की को हमें देख दो just a minute see your answer की answer correct one से पचारची all
3 statement, 2 statement, 1 statement. Now this is pretty innovative answer ki diya jaichi. एटी कौन कही को 2 statement मु कहनी 2 statement are correct, 3 statements are correct, 1 statements are correct, all statements are correct. Now here you can see मु को 2 कोटा तुमको दिया जाई नहीं ना तुमको एई भले आंसर की प्रथम थर पई देखुछ एंड दिस ईयर यूपीएससी इनोवेट करिछि एमिति यूपीएससी एई वर्ष जो एमसीक्यू यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम हला एई भले ऑप्शन थिला सो दैट मींस देयर इज नो ऑप्शन टू एलिमिनेट द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही गायब ना बुझा पड़िबनी a meaning elimination method ही गायब there is no choice for the elimination only if you are pinpointed correct then choose the option otherwise minus marking habo now choose your answer All Yes, sir. all Three statement correct. One statement correct. one statement correct. AC ଭିତରେ तो सेमिति एसी कहला ना एसी तो मु देइनी ना टू स्टेटमेंट मु कहिची टू स्टेटमेंट 3 statements are correct. ना बुझि परछ प्रॉब्लम कोन होची ए भले आंसर की सहित दैट मींस तमे एलिमिनेट करि परिबनी ऑप्शन को तो ए भले आंसर Two statement correct. ना ध्यान से सुनो ए भले आंसर की आगु को आसीबो एग्जाम रे यूपीएससी जेहेतु इंट्रोड्यूस करिछि वर्ष इनोवेटिव अप्रोच आनिछि ओपीएससी केबे ना केबे ताको फॉलो करि मु कोनी कि दिस ईयर ओपीएससी इज गोइंग टू like adopt this kind of innovation answer for you but मु तुमको दे दो आगुरु अवेयरनेस क्रिएट करा दो कि यस यू गेट रेडी फॉर दिस है ना so here would be what all answer would be all that is all statements are correct अच्छा आमे पढ़ी थिले 27 ना तो 28 हे गेले कोन असुविधा let's say 27 तमे जानि छ 28 हे गेले असुविधा कोन that's great that's fine no wrong कोन 28 हे गेले साइक्लोन होबनी एमति त आमे कोठी पढ़ी ना जीवन तो 30 हे गेले साइक्लोन होबनी सुपर साइक्लोन हे जीवो ना बुझा पड़ोनी दैट मींस हमरो मिनिमम दरकार 27 ताधरु प्लस हे परे किछि भी सो दिस इज करेक्ट ताले ऑप्शन ए करेक्ट कोरिलेस फोर्स तो दरकार ताले 2 ऑप्शन हमको करेक्ट मिली गला ताले तुमको दीटा ऑप्शन आसुथिला बाकी दीटा ऑप्शन बाकी समस्त को आसुनी मु जानि परुछि लो शियर फोर्स आसु नथिला हां कि ना ए ना प्रॉब्लम Again. प्रॉब्लम थिला कि थर्ड ऑप्शन एंड फोर ऑप्शन इट वाज द बैरियर ये थिला आंसर क्यों बैरियर है ना तो जो माने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ी देइछ मतलब लेट्स से हैविंग एनी काइंड तमे केबे क्लास करिछ मु कोनी कि मोटू पढ़ीछ बोली मु काटू भी पढ़ीतबो जदी इफ यू हैव रिवाइज है ना तो ठीक अछि जदी न पछ मु कवर कर दउछि शियर फोर्स कहले कोन when I say low shear force गोटे था shear force और गोटे shear strength hope everybody aware shear force and shear strength हमें जेतले लैंडस्लाइड पढू ना सेतले अप्लाई करा जाय जब यू एठी लैंडस्लाइड कथा तो मु डिस्कस करूनी मु साइक्लोन कथा डिस्कशन करूची लेट्स से मु गोटे कंडीशन पुट करिछि एटमॉस्फेयर रो ये होची एटमॉस्फेयर बेस बाबू फ्लोर ऑफ द अर्थ है ना ये होची हमर फ्लोर कहले सरफेस कथा मु कहूची सरफेस रु ऊपर को गले कोन अल्टीट्यूड हमें ताको कोन कहूची अल्टीट्यूड प्रत्येक अल्टीट्यूड भाव गोटे किलोमीटर ऊपर विंड रा स्पीड जाउची 20 किलोमीटर 2 किलोमीटर अल्टीट्यूड रे विंड रा स्पीड 40 किलोमीटर आउ गोटे देखले 80 किलोमीटर जदि वेरिएशन विंड रा स्पीड अल्टीट्यूड सहित अधिक रहइबो ताकू कहै जे हाई शियर फोर्स आउ जदि अल्टीट्यूड रे हमें बढ़ुचे गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 5 6 7 लाइक दिस बट द वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड इज प्रीटी लेस ताकू कहै जे लो शियर फोर्स आउ दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड नॉट हाई अब जा पड़िबनी एबे अब जा पड़िबनी शियर फोर्स yes sir मु जानि जे एटा टिके डिफिकल्ट थिला ऑप्शंस एंड दे आर प्रीटी डिफिकल्ट क्वेश्चन थिला बट हां तमे सेति पे तमे पुट करछे कि सिखिबा बोली बुझि परछे कि तो एथरा हमको शियर फोर्स जानो तुमको ताल लो शियर फोर्स रो काम कोन लो शियर फोर्स तो जानि गेली काम कोन लो शियर फोर्स एथि पे काम करिवो लेट्स से from your water bodies those moisture are coming they will station for the long period of time they would not be driven out if there would be fast flowing air they will drive out the air from that particular region and that would not give the time for the formation of cloud so we need low shear force for the formation of cyclone is it fine everyone now comes to the upper air divergence cyclone ro dita part thai obviously physical part cyclone को तीन भाग रे भाग सर लो शेयर फोर्स टिके आउथरे कहबे low shear force कहले as I vertically move into the atmosphere that is with the altitude the wind speed remain
more or less same. Every altitude, let's say 1 kilometer, 2 kilometer, 3, 4, 5, 6, whatever the altitude you might take, the wind speed would be near about same wind speed. It would not vary so much of variation would not be there. It would be more or less uniform wind speed. Such kind of condition in atmosphere known as the low wind shear force. Now comes to the upper air divergence. तले कौन था साइक्लोन रो तले था लो प्रेशर ऊपर था हाई प्रेशर केते जण जानि नै कथा ऑनेस्टली केते जण ऑनेस्टली जानि नै कथा साइक्लोन रो ऊपर हाई प्रेशर थाई बोली समस्ते जानथिलो बा बहुत बढ़िया कथा यू आर मतलब प्रेटी अहेड है ना तो दैट मींस कोन ताले हम देखो अपर एयर कोन था डाइवर्जेंस था आ हाई प्रेशर आउट टिके पूर्व कहथले हाई प्रेशर एयर को डाइवर्स करे और लो प्रेशर एयर को कन्वर्स कराए है ना दैट मींस हियर वुड बी सेंट्रीपेटल एठी कोन रहइबो सेंट्रीपेटल हियर वुड बी सेंट्रीफ्यूगल डन लेट्स मूव ऑन तो दैट दिस इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मु तुम कहै छी कोन करिवो ऑल ऑफ द अबव मतलब इट्स योर लॉ इट्स नॉट माय लॉ ओके तार मते कहबन भूल गेला सर है ना मु कहै छी more than 95% chances that your answer is going to correct in case of application based MCQ. Otherwise it's rest up to you. I would not be responsible for that. You must not say like that, sir, you told me to attempt the question. I never said to attempt. I said chances of correction or the correct answer would be 95%. 5% nobody knows, even not I. Now which is incorrect about the fronts? Front कोटे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना इट फॉर्म्स थ्रू आउट द ईयर इनकरेक्ट से कहि प्रथम तो एमसीक्यू रे आगे एमती सर्कल कर देबो कि करेक्ट कहि ना इनकरेक्ट बिकॉज़ ह्यूमन टेंडेंसी इज दैट करेक्ट तो इनकरेक्ट को तुम फाइंड आउट करिवो हैविंग टू आमी कहबा पार्ट्स टू पार्ट्स गोटे कोल्ड थाय गोटे वार्म सेक्टर थाय इट फॉर्म्स बोथ ओवर वाटर एंड लैंड बस तुमको दिया जाय छी ऑप्शन दिया जाय छी सर डी की कहले डी तो ना कोन pronunciation okay anyone else Say the D. D's answer but why it is the Sir, between 30 degree to 65 degree north and south very good so it kon that means tomorrow start abo subtropic region pore so either you can say 30 degree nei paro nole 35 nei paro up to 65 तो एठी जानि कि 20 मु पुट करि छी 20 तो ट्रॉपिकल एरिया आसी जबो केमती हबो सो दिस इज कैंसल तो तुमको क्लू दिया जाई छी है ना ना बुझा पड़िबो टेम्परेट रीजन है ना तो ये टेम्परेट रीजन रे देखा जबो ठीक अछि तो दैट पुट्स आंसर इज गोइंग टू बी डी तो आंसर होची डी बाकी ये ठीक अछि थ्रू आउट द ईयर फॉर्मेशन अब एठी दीटा कोल्ड आ गोटे वार्म एयर मास दरकार गोटे कोल्ड सेक्टर को जाय गोटे वार्म सेक्टर को जाय जेमथि लेट्स से गोटे वार्म एयर एमथि जाउची आ गोटे कोल्ड एयर आसुची ना दीटा एयर मास दरकार एपटे हम लिखले कोल्ड एपटे लिखले वार्म तो एपटे सेक्टर को कहा जो वार्म सेक्टर दिस साइड कुड बी नोन एज द कोल्ड सेक्टर दीटा रे मीटिंग रे ताले दीटा एयर मास दरकार ऑफ डिफरेंट एयर मास सेम एयर मास ले हबनी वन वी नीड वार्म एंड गोटे कोल्ड दरकार है ना ये बोथ वाटर रे ही परिबो लैंड रे ही परिबो नो इशू है ना कारण ये डिपेंड ऊपर कहा ऊपर एयर मास ऊपर बट ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा पर डिपेंड करे मॉइस्चर ऊपर अगेन आई रिपीट ट्रॉपिकल साइक्लोन डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर सेट में वाटर टेंपरेचर हमको दरकार 27 so that we will have more the moisture more the tropical cyclone the cyclone intensity would be pretty high but when I comes to the but front or this is also called as the temperate cyclone भी आपको कहा जाए front द्वारा ही temperate cyclone formation हुए so temperate cyclone ताने कोठी ही पर वाटर भी ही पर लैंड भी ही पर front कितने प्रकार है anyone how many types of fronts are there either it would be cold it would be warm ଆଉ କଣ ହେଇ परिबो stationary Okay. तो stationary ହେଇ पारे warm ହେଇ पारे cold हेई पारे तापरे हम जिबा कोन warm occluded cold cold occluded occluded or what? है ना तो सेटा साइक्लोलिसिस रे तो जनरली हमरो कोल्ड थाए वार्म थाए स्टेशनरी थाए आउ तमे जति ताकू साइक्लोलिसिस रे पुट करबो कोल्ड ऑक्लूडेड वार्म ऑक्लूडेड तो टोटल पांच प्रकार फ्रंट थाए है ना फ्रंट कोठी फॉर्मेशन हे परियो ये थला हमरो फ्रंट ऊपर क्वेश्चन तार डिस्कशन
तो सब डिस्कसन आम करुचे अदरवाइज आम तो फटाफट साथ दे पारिबा होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ दिस अच्छा केते मतलब anyone is there who was expecting some kind of MCQ the way you expected but I am not able to satisfy you anyone you can also put your suggestion anyone like that let's say somebody had मतलब wished like that कि हाँ एमती रहिबो डिस्कशन कोन एमती किछि कार किछि अछि डाउट कि आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट वन एज वेल है ना नो वन वेरी गुड थैंक यू that means you guys are very cooperative thank you so shape of temperate cyclone এটা obliques. now shape of temperate cyclone option A is oblique shape option B is a random does not have any shape option C is a round shape option D is a V shape केमते रहइबो who said V shape could you please name Anupriya very good so it's going to answer is V है ना so answer is what V shape temperate cyclone जो मैंने पढ़ी छो तम मन को पढ़ा जाई छी temperate cyclone बट तमे ताको रिवीजन करिना है ना ठीक अछि so V shape रे देखा जबो so it would be no oblique है ना तो V shape देखा जबो so this would be answer कारण let's say गोटे warm air आसुची ना warm air move करूची एमती warm air एपटो cold air आसुची तो warm air would be uplifted ना uplift हे जबो तो uplift हे कि कोन हे जबो ए completely from both side it would be uplifted तो कोन हे जबो V shape रे देखा जबो को हाइतला एटा कोन inversion कोन हे जबो inversion हे जबोनी atmospheric inversion now which of the following cloud that is like sun and moon halo forms are responsible तो मैं let's say it cloud responsible एक है cirrus altos nimbus stratus anyone try cirrus so this one is correct ना cirrus कोन एबे cloud फटाफट हम डिस्कस कर दवा ताले cloud हम डिस्कस कर दवा ए क्वेश्चन रे त हम फ्रंट डिस्कस कर देले केतेटा प्रकार फ्रंट अछि है ना और एक्स्ट्रा अच्छा ए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आउट डिस्कस कर दिए है ना एटा खाली मु सेफ टा कहि देली ठीक अछि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कोठी फॉर्मेशन होई एमान को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाय बा टेम्परेट साइक्लोन कहा जाय दे फॉर्म्स बिटवीन साधारणतः हमको केते देखा जाय 30 डिग्री टू नै कि तमरो 60 डिग्री जाए ए भीतर देखा जाए दैट मींस टेम्परेट रीजन देखा जाए दे आर डज नॉट हैव मतलब टेम्परेट साइक्लोन अदर आपको हमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाए टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाए डज नॉट हैव एनी डेफिनेट टाइम in the year के this time would be the time where the when the temperate cyclone will form temperate cyclone does not have any time bonded से केते बेले भी फॉर्मेशन हे परे बस डिपेंड करे का ऊपर एयर मासेस ऊपर ना माने पडुनी ए एयर मास ऊपर डिपेंड करे केतेटा एयर मास दरकार 2 एयर मास वन वुड बी वार्म वन वुड बी कोल्ड दीटा एयर मास हे गले कोन हिजबो मीटिंग रे फॉर्मेशन हो टेम्परेट साइक्लोन थ्रू आउट द ईयर टेम्परेट साइक्लोन रो कोन आमे फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन रो पार्ट्स कोन थे फ्रंट्स गोटे कोल्ड फ्रंट थे गोटे वार्म फ्रंट थे एकबा मन रखियो है ना अब एथरे रेनफॉल कम हुए टेम्परेट साइक्लोन रो एरिया अधिक थाए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जाय रहबो तारो है ना डायमीटर टा ट्रॉपिकल साइक्लोन रो 150 300 that would be the diameter of tropical cyclone temperate cyclone कोन थाए मतलब एते वायलेंट न थाए एते डेवास्टेटिव न थाए टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन ना बहुत क्षति करे ट्रॉपिकल साइक्लोन रो विंड स्पीड अधिक थाए जेमति हमर फानी नै जाओ आम्फान नै जाओ एमानकर विंड स्पीड बहुत अधिक थाए एमानकर लाइफ स्पैन शॉर्ट अल्प समय पे आसीबो किंतु पूरा तबाही मचै देबो किंतु टेम्परेट साइक्लोन ना ये 15 दिन 7 डेज यूजुअली 7 डेज थाए है ना हमारो 2 to 3 डेज ट्रॉपिकल साइक्लोन रो शेप टा कोन राउंड शेप सर हां राउंड शेप ट्रॉपिकल साइक्लोन रो राउंड शेप किंतु टेम्परेट साइक्लोन रो वी शेप थाए है ना एबे ट्रॉपिकल साइक्लोन रो कोन बे हेवी रेनफॉल रहबो अल्प समय रो क्लाउड बर्स्ट हे परे थंडरस्टॉर्म हे परे लाइटनिंग हे परे दैट वुड बी हाईली डेवास्टेटिव थाए बट टेम्परेट साइक्लोन कोन लॉन्ग स्पान थो ड्यूरेशन अधिक थो झिपि झिपि रेनफॉल होथो मु कहनी कि सब बेले ऑल
मतलब there might have copious rainfall in cold front, kind of different front will be associated with a different type of rainfall and cloud. So that is I am not going into that deeper part. Okay, କାରଣ ସେଇଟା ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ହେଇଯିବ ପୁରା, ତ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉନି, ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ଓଭରଭ୍ୟୁଜ୍ ଖତମ। Let's move on. साइरस क्लाउड कहूली, साइरस क्लाउड जी तुम देख साइरस क्लाउड्स आर द टॉप क्लाउड है ना, एम को कह गोटे मु ये पिक्चर नहीं देखिए फटाफट, जस्ट एक मिनट टिके होल्ड करो, लेट मी गो थ्रू दैट वन। माने एमती इमेज हेले कौन जो ना जल्दी बुझी पार। देखो जो ये क्लाउड अच्छी जे देखिए देवी, जस्ट अ मिनट, यस यू विल हां नहीं ये ठीक है। एक मिनट देखो जे क्लाउड अच्छी कि खाली माने सो दैट कि इजी हे देखिया पे। एठी देखो फ्रंट्स, एबे फ्रंट्स कथा कहतला पिक्चर देखि पारो केमती वी शेप रे अछि है ना, ये देखो वी शेप रे देखाउ छी। तो ये हला तुम टेम्परेट साइक्लोन वी शेप जोटा मु कहतले एबे, हियर यू कैन पिक्चर रे तुम देखि परबो केमती वी शेप रे अछि है ना, देखि परबो समझते एवरीवन। टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म, हियर यू कैन सी द वी फॉर्म डन। ये फ्रंट केमती फॉर्मेशन है, हियर यू कैन सी द वी शेप। ओके ना बुझा पड़िबनी। एबे ऊपर हाई प्रेशर तुमको साइक्लोन रो कहा जाय, एबे क्लाउड्स देखिबा हियर, ये देखो तुम साइरस क्लाउड ना, क्लाउड केमती देखा जाए, दिस आर द साइरस ऑल्टस निम्बस एठी तुम दिया जाइछि। तो साइरस क्यूमुलस साइरस स्ट्रैटस डिफरेंट थाए। तो साइरस क्लाउड्स कोन ना आमे जोटा हाई क्लाउड को कहू साइरस क्लाउड। सो ए जो तुमरा हाई क्लाउड एगुला तुमरा साइरस बा सीरस जा को जो क्यूमुलस कहले जोटी एखाटी रहले क्यूमुलस को आ जाए, जदी गोटे गोटे रहला एटा होचे हमरो प्योर सीरस क्लाउड, एटा हला क्यूमुलस, क्यूमुलस रो अर्थ टुगेदर बुझि परछ नै एमते को आ जाए। तो एटा सीरस क्लाउड देखा जो। स्टेटस देखि पारो लेयर, स्टेटस अर्थ लेयर क्लाउड, क्यूमुलस अर्थ आमे जोटा कहले एखाटी हे कि रहबा पैचेस पैचेस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड किंतु उल्टा, ये देखो ये केमती देखाउची डोम्स, ये केमती देखाउची डोम शेप विथ फ्लैट बेस, डोम शेप विथ फ्लैट बेस। तो ये तुमरो डिफरेंट क्लाउड एमती तुम क्लाउड देखि परिबो। मिड लैटिट्यूड हाई लैटिट्यूड, हियर यू कैन सी द सन हालो, एठी तुम सन हालो भी देखि परिबो केमती सीरस क्लाउड एठी लिखा आइछि, सीरस स्टेटस भी लिखा आइछि तुमरो ऑप्शन रे भी सीरस स्टेटस अछि है ना। सो मैच करूछि बिल्कुल ना, मैच करूनी ना बुझा पड़बन काहू है ना। सन हालो कहले सन चारिपटे एमती गोटे लेयर देखा जो, सन हे परे बोन हे परे एमती तुमको देखा जो है ना। डन एवरीवन, यस सर। ओके सर এটা above 20,000 feet না, that means 6 kilometer above। तो ये सेटा एक्चुअली सीरियस क्लाउड तुम जे देखिबो सेटा मतलब 6 किलोमीटर, हाँ जोटा तुम कहूछ 7 किलोमीटर टिके अधिक थाए, सेटा 5 न 7 चलिबो किछि नै, सेमती 6 न 7 नै गेले चलिबो। अप टू हमर 16 किलोमीटर जाय सीरियस क्लाउड देखा जाय, केतरो 18 किलोमीटर देखा जाय, केतरो 20 किलोमीटर देखा जाय सीरियस। बट सीरियस स्टेटस टा टिके तळे देखा जिवो कहले हमर होप इट वुड बी 10 किलोमीटर विद इन 10 किलोमीटर रहिबो है ना। ये देखो मैं स्टेटस क्लाउड मु तुमको एबे देखै देली के लेयर क्लाउड था, एमती लेयर लेयर हिकी थवा। निम्बस केमती थाए वर्टिकल डेवलपमेंट रहबो, फ्लैट बेस, बेस टा केमती रहबो फ्लैट रहबो, टॉप टाइम ती डोम शेप रहबो हां। यार पूरा थिकनेस बहुत ही अधिक रहबो ए क्लाउड रो, यार थिकनेस तुमको एमती क्वेश्चन भी पचारे कि लेट्स से हमें कहबा जो हमरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कथा हम कहूची है ना, कि निम्बस स्टेटस किंतु अलगा, निम्बस स्टेटस लेयर रहबो बस ब्राउन कलर देखा जिवो, ब्राउन कलर रहबो। ऑल्टो स्टेटस कहले मिडिल क्लाउड, ऑल्टो क्लाउड कहले मिडिल क्लाउड, सीरियस क्लाउड कहले हाई क्लाउड, निम्बस कहले लो क्लाउड। बस एगुडा टिके मन रखिबो है ना। ये थला हमर एक्सप्लेनेशन, लेट्स मूव ऑन। तो आज तो टिके लो चलची मु है ना, 1 आवर कवर हे पारुन 25 क्वेश्चन देखिबा जति के हे पारुची हो है ना। इवनिंग रे डिस्कस करे पे चेष्टा करियो, कंप्लीट करे पे 50 क्वेश्चन कना पर डे, मोर टारगेट 50 क्वेश्चन। What is the difference between rain and dew? Now this is also logical question. What is the difference between rain and dew? सेटा ए ऑप्शन। So mu jani che maximum pila koi paribani, so answer is
ए बस एतिके रट्टा मार दियो कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली दरकार रेन रे कोन थाए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली दरकार ड्यू रे न थाए मु जानछि एटा टिके टफ क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना ओबवियसली यूपीएससी लेवल रो क्वेश्चन दा के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल बट हम तमे मन रखी पारिबो तुमको एमती वेक ऑप्शन दिया जिवो के एटा कोल्डर सेटा लार्जर अमक ढमक ए सब फालतू रे दिया जाई खाली कंफ्यूज करिया पे आउ किछ नै है ना मतलब दो आई हैव पुट दिस ऑप्शन काई जनकू जोटा मु कहलिनी ए भलिया क्वेश्चन दिया जाई कोन सो दैट जे न पढी छि ना ताको एलिमिनेट करिया पे से लोभरे मार दो के हां एटा हबो बुझ परतो नै नेक्स्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द वैली विंड so this one is pretty easy questions to all try everyone valley wind Sir, catabatic. very good so this is catabatic valley re दी प्रकार wind थाए one is the descending wind one is the ascending wind को हमें anabatic कले अन्ना सबले ऊपर बसंती अन्ना सबले कोठी बसंती ऊपर ना अरे रजनीकांत अन्ना बुझी परनो बुझ परछन तो अन्ना सबले ऊपर थाए that means from valley to slope एटा हमर कोन slope एटा कोन रहबो slope this is the slope and this one is the valley तळे रहबो valley तो valley to slope हेले anabatic and slope to valley हेले catabatic ताले मते को catabatic केतळे देखा जिवो whether that would day or night केतळे देखा जिवो नाइट रे देखा Night, sir. नाइट रे देखा जिवो वेरी गुड बुझा पड़िबो एटा कैटाबेटिक एनाबेटिक चिनुक तो समस्त जानिछ चिनुक इज व्हाट चिनुक गोटे आइस हीटर कोठी देखा जाय यूएसए मिस्ट्रल सीवियर कोल्ड कोठी देखा जाय फ्रांस ऑलरेडी हम पढिछे चिनुक कोठी देखा जाय यूएसए रॉकीज रो कोपट साइड देखा जाय लीवार्ड साइड ना बुझा पड़िबोनी ए सब ऑलरेडी डिस्कस करिछे हम आगुरु एंड नाइ कि फर्स्ट टाइम चिनुक कहूची जो एमसीक्यू आगुरु डिस्कस करा हिची तमरो 100 और समथिंग तेरे हिची ना ए सब कहैची डन एवरीवन ना काकू बुझा पड़ोनी Should I move ahead? Jet stream. Yes, sir. Which jet stream plays major role? Please, आपको देख दो. I'll correct the major role for the formation of monsoon. The subtropical jet stream. subtropical jet stream. मु जानी छले समस्त सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ही कहबो सेति में दियाई छी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आंसर सो आंसर इज व्हाट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाको तमे सोमालियन जेट भी कहउछो ये होची मेन रोल है ना तनो याको नबो आंसर भूल करिबनी बोर्ड मु जानी छी समस्त सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ही मारिबो सेति में ऑप्शन जे दिया जाई छी है ना मु तुमको गोटे कहे सब बोले है ना मो स्टूडेंट मानको मु कहे सब बोले कि जो क्वेश्चन इजी देखा जाए से इजी नुहो ताको ऑप्शन जानी के डिफिकल्ट दिया जाए देखा जो इजी बट इजी नुहो है ना सुधरब कोन Sorry, sir, भूल गेली टे है ना मुझे कहि टेक्निक कि इजी देखा जीवो इजी नुहो सेति पे ट्रैप करा जाए आको कहवा जाए हनी ट्रैप इन एमसीक्यू सो आंसर इज व्हाट ईस्टर्ली जेट नाउ मूव ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन known for the origin of wind option 1 subtropical high pressure belt polar high pressure belt equatorial low pressure belt doldrum region फटाफट चूज करो fast Sir, it 1, 2, 3. time is running out please go ahead please try from your side everyone subtropical high pressure belt होते की देखी दियो ना आंसर की को मते So 1, 2, 3. 1 2 3 Option C, I think. 1, 2, 3. 1 2 ऑप्शन वुड बी ए प्रथम कथा डोल्ड्रम रे एयर होइने एयर सबले हाई प्रेशर रे ही हबो लो प्रेशर को एयर जाए एयर फॉर्मेशन को उठेबो हाई प्रेशर जेमति कि मु तुमको प्रूफ करौची लेट्स से एला हमरो एमति आसुची तमरो कोन दीपट साइड के जाउची ट्रेड विंड तले ओरिजिन को उठी होची ट्रेड विंड हाई प्रेशर ना एपट को गले वेस्टर्ली एपट को आसले ईस्टर्ली पोलार की आसुची ईस्टर्ली तले ओरिजिन को उठी होची हाई प्रेशर रे तले हाई प्रेशर को उठी ये भी हाई प्रेशर लो प्रेशर विंड के भी ओरिजिन वे नहीं तो ये तो डोल्ड्रम लो प्रेशर इक्वेटर लो प्रेशर केमति हबो yes sir
ना बुझा पड़बनी विंड पैटर्न देखि दियो मैप मिली जो सर तुमको ऊपर दिटा कंफर्म थिलु बट सर इक्वटल रीजन भितर सेटा कंफ्यूज करे पे दिया छि सेथि भाई मु आगुरु कहि छि ध्यान से देखिबो काना तुमको ट्रैप करे पे चेष्टा करबो एग्जाम में अवश्य मु टिके डिफिकल्ट सर पोलर हाई प्रेशर तो हमर आसी गला जी पोलर हिस्टोलिज और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर आसी गला हमर ऑस्ट्रेलिज ए दिटा तो सर कंफर्म बट ए दिटा सर टिके जल्दी करिवे कि सर लेट होची ऑफिस ट्रेड विंड भी तो रहउछि ना हां एबे 9 टा हे गेला ना एबे छाड़ देबा 9 आमे कहै 9 रे खत्म सो दिस इज द एंड तेणु तुम को जनरल रिक्वेस्ट होछि कि ठीक 8टा शार्प 8 रे स्टार्ट करबा आज राती सेम रहबो इवनिंग रे हमर 8 पीएम रे स्टार्ट हबो 9 पीएम रे एंड हबो एंड आई विल ट्राई एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करे पे मते कोऑपरेट करिवो सो दिस इज द सर एंड आर किछि रिकॉर्डिंग अवेलेबल